Okay, welcome guys. So this is the continuation to the previous video only. In the previous video, we have seen what if else loop is. So let's do a basic program on that so that it is more clear to you. Okay. So if I'll say you that, okay, let me tell you the problem statement. What the problem I'm giving to you? Problem statement. Okay. So what the basically the problem statement is? First thing what you have to do, because like this only in this industry also you are going to get a problems. Okay, so in problem statement, okay, see here I'm you going to use multi-line statement. Okay, multi-line comments, because again this compiler will ignore this. Okay, so my problem statement is take a value, take a value, take a int value. This is my own program and just leave it what I'm going to do. But just listen. Take a int value from the user. Okay. First thing what you have to do, you do not have to assign a value. You have to take a value from the user. Okay. Then check whether it is even or odd number. Okay. What you have to check whether it is an even or an odd number. Is this problem statement clear to everyone? So basically in this program, what I have to do, I have to take a value from the user and check whether it is an even or a odd number. Is this clear to everyone? Should I proceed further? Okay, let me proceed further. So problem statement ko I'll cut and I will so that you should not get confused. I'll put an on the top of it. Okay, I will just remove the white spaces so that yeah. Now my the problem start the program start from here. Okay, the first thing, what the first thing is, okay, let me 1 minute. Compiler is not behaving, it is behaving weirdly, some bugs are there, I think so. Okay, no problem. So now first of all what I did, we have to take a value, तो हमें value को declare करना तो पड़ेगा. तो I'm doing int num से what I did, I declared a variable. ठीक है. Now what is my second step? I have to check, I have to take this value from the user. अगर वो user को नहीं बोलता तो I would have directly given it 10 और मैं 10 को check कर लेता कि even है या odd है. ठीक है ना. But I have to go for the I have to take the value from the user. So coming to this, whether it is spelling is wrong. Is this clear? No, this is whether spelling ठीक है यार, whether spelling देख लेना अपने आप. So now whether we have to check it even or odd. This is the second part of the programming language. हमेशा अपने आप को एक स्ट्रक्चर में प्रोग्राम करना चाहिए. फर्स्ट चीज तो हमें पहले खत्म क्या करनी है कि whether it is taking the value from the user or not. तो पहले अगर आप बिगनर हो ना तो just take a value from the user and print it. पहला काम करो प्रिंट इट, क्योंकि हमेशा प्रोग्रामिंग को ये नहीं कि पहले पूरा भर के कोड लिख लिया. नो, ऑलवेज ट्राई टू राइट अ सिंगल सिंगल लाइन एंड ट्राई टू रन इट, ट्राई टू डीबग इट. ऐसा हुआ कि आपने पूरा बड़ा सा प्रोग्राम लिख लिया एंड यू गेट थाउजेंड्स ऑफ एरर. दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस ऑफ डूइंग प्रोग्रामिंग. तो लेट मी टेल यू हाउ टू अप्रोच फॉर एनी प्रॉब्लम. तो नाउ प्रिंट एफ, आई विल गिव अ कंसोल मैसेज टू यूजर. एंटर, this is totally your capability, your understanding what you're writing. Enter any number to check whether it is even or odd. ठीक है, ये तो मैंने क्या दे दिया, ये तो मैंने यूजर को एक प्रिंटफ स्टेटमेंट दे दिया कि चलो ठीक है. नाउ आई रन दिस, I'll run this. यहाँ पे क्या दे रहा है? Enter any number to check whether it is an even or odd. But you can see the console. This जो ये जो link है जो pop-up हो रहा है, it is after the console. But इसको तो यहाँ आना चाहिए था, because I have to write any value on this. तो मैंने आपको पहले भी सिखाया, you have to use scanf. What you have to use? Scanf. Scanf is just the scanning the. It will provide you a platform to check the. तो हमें कौन to store the value on it. तो हमने क्या यूज किया? %d. क्यों? क्योंकि हमें int value store करना है और उसको हम store कहाँ करेंगे? हम एड्रेस क्या देंगे? नम में. हम उस वैल्यू को कहाँ पे स्टोर करेंगे? नम में. ठीक है, इतना क्लियर है. देन अगेन रन, अगेन रन. नहीं, बिफोर रनिंग टू इट जस्ट चेक इट, क्या वो वैल्यू सही दे रहा है? द वैल्यू ऑफ यूजर इज परसेंट, सॉरी %d. ओके, द वैल्यू ऑफ द यूजर इज %d. और यहाँ पे हम क्या डाल देंगे? नम डाल देंगे. इज दिस क्लियर और नॉट? कि मतलब हमने वी हैव टेकन द वैल्यू फ्रॉम द यूजर. लेट्स चेक इट whether it is the same number which we have taken or the compiler is taking any random value. Okay, now run this.
One more thing, this I have already taught you in the previous video. Still, I'm repeating so that it should get memorized. Don't feel bored, okay? Now I'm going to write a number 12. I'm going to write a number 13. No, no, 13 is not a good number. So let's start with my favorite number, okay? That is my favorite number is 4. I will not tell you why it is my favorite. Okay, so yeah, if I okay, my favorite numbers. I have many favorite number. I have 4. I have 16. Okay, I have 27 also. So is it 27 or it is 26? I am forgetting. Okay. Uh, okay, no problem. So let me go with the 4. Okay. Now see, the value of user is not value of number. Number by user is 4. The value of number taken by user. Yeah, what happened to my English here? Okay, again I'll run. Again I'll check. Again I'll go with my favorite number, that is 26. Okay. So now will I try? The value of the number taken by the user is 26. So the my program is working absolutely fine. जो मैंने number दिया है that is getting displayed. Now let me remove this because this was just for the testing purpose. तो यहाँ पे मैं comment कर दूंगा. Comment means I'm just now the logic comes. अच्छा, तो अभी हम आते हैं लॉजिक पे। अगर किसी भी नंबर को हमें चेक करना है वेदर इट इज इवन और एन ऑड, फॉर इंस्टेंस लेट्स टेक अ नंबर 5। अगर हमें 5 को अगर हमें चेक करना है कि इवन है कि ऑड है तो हम क्या करते हैं? बेसिकली वी डिवाइड दैट नंबर बाय 2, राइट? व्हाट वी डू, वी डिवाइड इट बाय 2। हम उस नंबर को डिवाइड करते हैं 2 से, देन वी चेक कि मतलब वो क्या बोलते हैं, उसका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा या 1 होगा। या तो 0 होगा रिमाइंडर या तो 1 होगा। अगर वो रिमाइंडर 0 है देन इट इज एन इवन नंबर। क्या? अगर रिमाइंडर 0 है देन इट इज एन इवन नंबर। अगर इफ द रिमाइंडर इज कमिंग अप टू 1, कमिंग 1, देन इट इज एन ऑड नंबर। इज दिस बेसिक आइडिया क्लियर? मतलब अगर आपको नहीं पता है हाउ टू चेक इवन और आई एम टेलिंग दैट आल्सो, ठीक है? इज इट क्लियर? नाउ आई विल अप्रोच विथ माय थिंग। नाउ इफ, व्हाट आई एम यूजिंग? इफ, तो ये printf स्टेटमेंट लेट मी रिमूव, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। नॉट प्रॉब्लम, इट विल कंफ्यूज यू कि ये कहाँ से। इफ नम, हमारी जो वैल्यू है वेयर इट इज स्टोर्ड इन नम। वेयर इट इज स्टोर्ड इन नम। एंड रिमेंबर व्हेन आई वाज टीचिंग यू द अरिथमेटिक ऑपरेटर, आई टॉट यू मॉडुलस ऑपरेटर। मैंने क्या टीच किया था? फॉर डिवीजन वी यूज डिवीजन ऑपरेटर, बट फॉर रिमाइंडर व्हाट वी यूज? मॉडुलस ऑपरेटर। व्हाट वी यूज? मॉडुलस ऑपरेटर। अगेन आई एम टेलिंग फॉर द रिमाइंडर थिंग व्हाट वी यूज? मॉडुलस ऑपरेटर। क्योंकि मैंने अरिथमेटिक में ही, ऑपरेटर्स में ही आई टॉट यू कि मॉडुलस विल गिव यू अ रिमाइंडर। तो इफ नम मॉडुलस 2, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? बेसिकली आई एम चेकिंग द रिमाइंडर by dividing it by 2, I am checking the remainder. What is it coming? Is it coming equal to 0? तो ये मेरा क्या होगा? ये मेरा एक एक्सप्रेशन हो गया। ये मैंने क्या एक्सप्रेशन बनाया? इस नम मॉडल, अच्छा, लेट मी रिवाइज द कंसेप्ट ऑफ, ओके ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? प्रिंट एफ करता हूँ। प्रिंट एफ परसेंट डी, यहाँ पे मैं परसेंट डी कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैं पहले दिखाता हूँ नम मॉडुलस 2 करा के, ठीक है? यहाँ पे देखो क्या किया। यहाँ पे मैं बेसिक सा चीज, बिफोर जंपिंग टू इफ स्टेटमेंट लेट मी टीच यू दिस ऑल्सो। यहाँ पे मैं एक नंबर लग रहा हूँ, उस नंबर को मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूँ? नम मॉडुलस 2 से, ठीक है? यहाँ पे मॉडुलस हो गया और यहाँ पे मेरा डिवीजन हो जाएगा। क्या होगा? यहाँ पे मेरा डिवीजन होगा। क्योंकि आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए डिवीजन और मॉडुलस में क्या है। दिस इज मॉडुलस, दिस इज मॉडुलस ऑपरेटर। ये क्या देगा आपको? ये आपको ये आपको देगा रिमाइंडर। ये आपको क्या देगा? रिमाइंडर। और ये वाला क्या देगा? दिस इज डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर ये आपको क्या देगा? क्वोशिएंट देगा। व्हाट विल दिस गिव यू? क्वोशिएंट। रिमेंबर दिस इज, तो प्रिंटफ परसेंट डी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिमाइंडर, रिमाइंडर, ठीक है? और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ? क्वोशिएंट, ठीक है? और हम किस नंबर का कर रहे हैं? नम नंबर का कर रहे हैं। किस नंबर का कर रहे हैं? जो वेरिएबल नम जो हमारा यूजर डालेगा उसी का हम चेक कर रहे हैं, ठीक है? अभी हम प्रोग्राम पे जंप नहीं कर रहे हैं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इन दिस। ओके, लेट मी रन दिस प्रोग्राम नाउ। हम चेक करते हैं, लेट मी चेक विद द नंबर 26। किससे चेक किया मैंने? 26 से चेक किया। नाउ इफ आई चेक विद द 26, व्हाट आई एम गेटिंग? रिमाइंडर 0, 13 क्वोशिएंट। समझ में आ गया? यहाँ पे मैं एक मिनट और, एक मिनट। ओके, नाउ आई रन दिस, या 26। तो देखो रिमाइंडर क्या है? 0 है, बट व्हाट इज माय क्वोशिएंट? क्वोशिएंट इज 13। इज दिस क्लियर टू यू?
Okay, so guys, I will tell you, do not get confused with this part. Do not get confused with what I did. I would have done like this also. आप लोग को अगर ये confusion part create करा, I would have done it this also. Int answer. Instead of this, I am again assigning an as answer, and वहाँ पे मैं answer को क्या कर रहा हूँ? Answer is equal to कंट्रोल एक्स, यहाँ पे मैंने क्या किया, नम मॉडुलस टी, और यहाँ पे दिस परसेंट डी की जगह मैं क्या डालूंगा? आंसर. आई कैन डू दिस ऑल्सो. आई कैन डू दिस ऑल्सो. यहाँ पे मैं क्या किया, आई विल गेट द सेम आंसर, यू कैन चेक इट. आई, व्हाट इज दिस? क्या बोल रहा है? रिमाइंडर, व्हाट इज इट? ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी, आई मिस द सेमीकोलन. ओके, नाउ enter any number. I'll again go with 26. See, I got again zero remainder 13 question. तो ये क्या है? ये unnecessary चीजें हैं. ये unnecessary, I am increasing the size of the variable. So I should not do this. Okay? तो यहाँ पे रुक जाओ. हाँ, तो अपना ये ऐसे था. तो मतलब ये समझ में आया, परसेंट डी की जगह आप कौन सी वैल्यू, पहले तो हम सिंपली नम या फिर कुछ नंबर रिप्लेस कर देते थे, बट अब परसेंट डी की जगह हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं? नम मॉडुलस टू. मतलब जो भी इस इक्वेशन की वैल्यू आएगी उससे ये रिप्लेस होगा परसेंट डी. नम बाई टू से जिसकी भी वैल्यू आएगी उससे रिप्लेस होगा परसेंट डी. इज दिस क्लियर टू यू? इज इट मेकिंग एनी सेंस फॉर यू ऑल? If it not, then just please comment down below. I will teach you with more clarification. And trust me, no one is going to give you more clarification than this. Okay. Now let me check with one more number. Any odd number. So I'll go with, wait, I guess some net issue. Okay. Okay. Now I'll go with 13. Again, why 13 is coming? I'll go with 9. Okay. So now, if I went with 9, then what I'm getting? 1 as a remainder and 4 as a quotient. अब समझ में आ गया? जब हम 2 को 9 से divide करेंगे, you can do this also. By divide, you can divide by 3 also. You can check it by 3 also. No problem. जब आप 3 से डिवाइड करोगे, देन व्हाट विल यू, 9 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, देन व्हाट आई विल गेट? 3 एज अ क्वोशिएंट, एंड अगेन रिमाइंडर विल बी एज 1. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं, यहाँ पे 2 से ही डिवाइड कर, 2 से मॉड्यूलेट कर रहा हूँ ना उसको. तो इज दिस क्लियर टू यू ऑल? Is it making any sense? Okay. Now I think modulus and division operator is clear. Then we can jump to our number. Sorry guys, I जो अगर new है उनके लिए problem हो सकती है. तो is it making any sense? अगर कोई number is modulating by 2, if it is giving a 0, अगर हमें remainder 0 मिल रहा है, then what is that? That number is printf. The number is even. Is this clear? Is this clear to you all? And I will give. अगर ये चीज नहीं आ रही है, ये चीज नहीं आ रही है, then obviously that number will be odd. That number will be odd. Print f. The number is odd. See, यहाँ पे अगर मैं कोई भी परसेंट ही नहीं लिख रहा हूँ, then I do not need any comma for that. I do not need any replacement, so I am not writing it. Okay, is this clear? Now I will run the program again. So I'll check first. I'll check with 18. Okay, what is that 18? The number is even. Is that clear? तो ये मेरा प्रोग्राम हो गया कि नहीं हो गया? I clear it. अब let me check with any odd number. So odd number, again you have to run this programs. That is, you have to basic again for after every execution you have to run the program again. Let me try with 7. What is that? The number is odd. Is this clear to you all? Is it make any, does it made any sense to you all? Did you learn that? Just please comment it. Now the you can make more beautification to your program. यहाँ पे आप परसेंट डी डाल के यहाँ पे नम लगा दो. यहाँ पे परसेंट डी डाल के आप नम लगा दो. सेम वे यू कैन पुट हेयर ऑल्सो. परसेंट डी लगा के आप यहाँ पे नम डाल दो. देन व्हाट विल इट चेंज? यू विल गेट इन सॉर्ट अ वाइल रन. यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आई पुट 18 188. Okay, I checked the number 188. So what it is number 188 is even. So you saw पहले हमने क्या किया, परसेंट ही नहीं लगाया था. I was simply executing the program, right? But now you can see that परसेंट ही लगा के हम how we can make our program look beautiful. क्योंकि यूजर को समझ में आना चाहिए ना भाई, कौन सा नंबर यूजर ने नंबर डाले, बट कौन सा नंबर, मान लो ही हैज शॉर्ट टर्म मेमोरी, वो भूल गया नंबर, देन यू शुड स्पेसिफाई दिस वाज द नंबर व्हिच यू चेक्ड फॉर, एंड दैट इज इवन. Now one last execution. Okay, I'll check for 19919. Okay, what is this? This is odd. Is this clear to you all? The number 19919 is odd. So I hope you understood our very first program. I'll say first program only, and in future we'll just increase our difficulty level by more step. Okay. So till then, keep learning, keep hack coding. Jai Hind.